नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाएं। माई सेल्फ JVN डॉक्टर अर्चना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमन यूनिवर्सिटी, जयपुर. Now today we are starting with new topic, that is carbuncles. Carbuncles Carbuncles is a skin infection resulting in the formation of lump that may contain pus. Carbuncles is also known as a staph skin infection. When there is a formation of more than one carbuncles is called carbunculosis. अगर कहीं पे एक से ज्यादा कार्बनकल्स फॉर्म हो रहे तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनकुलोसिस. जो कार्बनकल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ पे, डीपली अंडर द स्किन में वहां पे डेवलप होते हैं, और जो प्रूफ ऑफ हेयर फॉलिकल्स है वहां पे. तो ए कार्बनकल्स अक्कर डीप अंडर द स्किन एंड इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स. Carbuncles appearance is a swollen, red, painful bunch of boils that are linked to each other beneath the skin. Carbuncles generally develop in hairy area of the body such as behind the neck, armpits, thighs, buttocks and groin region. Carbuncles are more common among men than in women. Now, causes of carbuncles. Carbuncles skin infection is caused by the bacteria Staphylococcus, Streptococcus pyogenes, and methicillin resistant Streptococcus aureus. These bacteria enter the skin by piercing through air follicles. These bacteria enter the skin by piercing through hair follicles. Carbuncles is highly contagious, therefore it can spread easily to other part of body and can affect other people. A lump formed due to carbuncles is filled with fluid, pus and dead tissue. People with dermatitis, diabetes and weak immunity system are at great risk of developing staph infection as their body cannot defend bacteria for longer periods. Sometimes poor hygiene and cut from clothing or shaving can also causes carbuncles. Now come to symptoms. A general symptoms of carbuncles is formation of red boil under skin. Next, a carbuncles can range from a size of peas to the size of half-grown onion. Other symptoms of carbuncles may include fatigue, fever, irritation, swelling, itching, pain around the affected area, spreading of lump to other skin area. Now come to investigation. First, blood sugar, rule out the diabetes, urine, sugar and ketone bodies. First, control of diabetes is essential using insulin, antibiotic like penicillin, cephalosporins are given on carbuncles. Drainage is done by a crucial incision and debridement of all dead tissue is done. Once wound granulated, well, skin grafting may be required. अगर wound क्या हो जाता है, ग्रेनुलेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपने को स्किन ग्राफ्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है.
अगर रीनल कार्बनकल्स है तो renal carbuncles is an entire which occur in kidney due to infection forming localized infective mass lesion. तो ये क्या था ट्रीटमेंट ऑफ कार्बनकल्स। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो अपन उसको डायबिटीज की मेडिसिन देके वो डायबिटीज की जो भी मेडिसिन होती है इंसुलिन है वो अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे। एंटीबायोटिक दे सकते हैं अपन इसमें ताकि पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, इसलिए कुछ एंटीबायोटिक है जो अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे अपने को उसको ड्रेनेज के लिए भी इंसिजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अपने को इंसिजन भी देना पड़ सकता है। अगर वुंड ग्रेनुलेटेड हो गया तो अपने को स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये क्या था ट्रीटमेंट ऑफ कार्बनकल्स। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर I will be discuss homeopathic therapies of carbuncles, and this session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.